ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर इस स्केप सीक्वेंसेस से, यानी जो टैब्स हम डिफरेंट स्लैश के साथ जो हम डिफरेंट सिंबल्स देते हैं वो के उनका पर्पस क्या है और व्हाई वी आर यूजिंग दीज टैब्स. Plus, I will show you the C++ screen and show you the program and the process of compilation and running of the program. ठीक है. So these are the escape sequences, and this is explanation with example. Am I clear enough? My voice is clear to you all? Okay, let's start. This is A and backslash A. A means alter or alarm. When you need to put an alarm, you have to give this switch. These are the different switches using for different purpose. Like for B, we are using for backspace. This is for formatting of the program. These all switches are used for the formatting of program. Slash T stands for horizontal tab. When you're going to print something, it will give the space of a tab. If you are given two backslash T, it means it gives you the two tabs, and one single tab means this is backslash T means that a single tab space will be provided in when displaying the result. Backslash N stands for new line. For new line, we are using N line as well, ENDL. This is also the syntax for the new line, but for this, we are learning, this is included in escape sequences. Backslash N means a new line or line feed. It inserts a new line and cursor move to the beginning of the next line. ठीक है. ये डिफरेंट स्विचेस हैं, ये प्रोग्राम में यूज करना. इट्स योर ऑप्शन. इफ यू वांट टू यूज देम यू कैन यूज, or otherwise these are optional. ठीक है. Backslash R carriage return. It is used to position the cursor to the beginning of the current line. On the line when you are working on that line, it moves the cursor to the beginning of the line. Backslash is used to print the backslash characters. Single quotation is used to print the single apostrophe, and quotation mark is used to print the quotation marks. These are the switches used for the formatting of a program. Now we'll move toward the operators. We started from the arithmetic operator in the class. Now we'll continue it. The operators, I explained it already. Increment operator, decrement, that is known as the unary operator as well, and binary operator. I explained two types of arithmetical operators. One is the unary and second is the binary operator. Unary operator means plus plus increment operator, and the second one is decrement operator, minus minus decrement operator. Okay. After that, the relational operators, logical operators, assignment operators, and arithmetic assignment operators. These are the list of the different operators we are using here. Now, see the diagram here. This is the operator, and these are the operands. Okay. In increment and decrement operator, we can use only one operand. In arithmetical binary operators, we can use two operands. Right? If you have any confusion between the lecture, you can stop me and ask the question. Okay. Now the arithmetical operators. In arithmetic operators, 5 different operators are used to perform an arithmetic operation. What are these 5 operators? Addition, right? Subtraction, multiplication, division and remainder. Modulus यानी remainder का symbol ये है. All operators except remainder. इस operator के अलावा बाकी सब integer type data है. I explained in the class the type of data: integer, floating, boolean, character. These are the different types of data. 4 operations में integer type of data है, but in the 5th operation it's a floating point data है. क्यों? Why floating point? Why it is a floating point data? Because it is used to find remainder of a division, and remainder could be in a decimal form, right? If you divide any number and you get answer in the decimal form, it would be floating point then, right? So floating point data is here in the remainder or modulus. Or integer type of data is here in 4 operations: addition, subtraction, multiplication and division. Clear?
After that, here is a program. Develop a simple calculator in C++, right? Now C, include IOStream as we use the library file at the beginning. Include CSTD IO फाइल, ये हमारी दो फाइल्स, हम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत सारी फाइल्स होती हैं एंड वी लिंक दैट फाइल्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्राम, right? Using namespace std integer mean void, you can write void as well and you can give blank parentheses as well. Now we declare the variables. Integer है हमारे पास a b the values. Now what variables we are going to use in this program? All the variables are initialized. First of all, we initialize all the variables, like we define that these variables are going to use in this particular program. So integer data, which type of this is a, b, add, subtract, multiply, remainder, division. Remainder पे floating हो सकता है, division पे floating हो सकता है, ठीक है? Now C out backslash n backslash t. C out backslash n means new line, backslash t means tab, the space of one tab. एक टैब में यूजुअली 5 स्पेसेस होती हैं, ठीक है? प्रिंट कैलकुलेटर. नाउ सी आउट, दिस इज फॉर्मेटिंग ऑफ अ प्रोग्राम, राइट? सी आउट द सिंबल्स ऑफ लेस देन, कोटेशन मार्क, न्यू लाइन फॉर बैकस्लैश एन, टैब फॉर बैकस्लैश टी एंड अंडरलाइन दिस वर्ड कैलकुलेटर. Now C out, enter the value of A. C in, as I told you in the class, in C out we used to give the symbol of less than, in C in we used to give the symbol of greater than. Namal, it's not necessary. I said you in this when we discuss about the sequence options. It is not necessary. This is for formatting of the program. लेकिन बेसिक हमने लोकेट, मैंने आपको बताया था लोकेट और टैब्स वो सब फॉर्मेटिंग के लिए होते हैं. इफ यू आर नॉट गोइंग टू गिव इट, इट्स ओके, इट डजंट अफेक्ट द प्रोग्राम. Now first of all we print this value and then C in A, यानी फर्स्ट वैल्यू हमने A में ले ली, यानी हमारी पहला प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है जिसमें A की वैल्यू हमने इनपुट करनी है. C मींस इनपुट करनी है. C आउट एंटर द वैल्यू ऑफ B और उसके बाद हमने उसकी B की वैल्यू ले ली C इन में, यानी इनपुट हमने A और B ले लिया. अब इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट. ऐड, we have already assigned a variable here, add. Now we use same variable here. If you are giving a capital letter here, a capital letter, and if you are writing small a here, it will give you the error. If you are going to use the small letters, you must use the small letters here. The variable must be of same punctuation, same case. ठीक है? If it is capital, it must be capital here. If it is small, it must be small here. Capital ADD is a different variable. Small add is a different variable, right? Now A plus B, whatever we have input in A and B, we are going to add these. C out, N for line, T for tab, addition of A and B is, ये variable हमारे पास आ गया add, यानी हमने add में add variable में इसको plus किया था, that's why it is given here. Okay, I gave you the program in the class and I made it simple that I give a single line. Addition of A and B is add. That was the more convenient way for you as you are the beginners. आपके लिए वो आसान रहेगा कि आप एक ही लाइन में उसको define कर दे, because putting on too many quotation marks will confuse you, right? You can give here addition of A and B, quotation mark close, semicolon, and then add, right? Now we are going to subtract A and B. Now the formula is put it here, and count subtraction of A and B is sub, same as multiplication and division, and after further remainder you give the symbol of percentage. ठीक है? REMD, the variable is also defined here. REMD, A percentage sign with B, it shows you the remainder.
Let's suppose this is the output. Let's suppose enter the value of A 15, enter the value of B 10. The value can be changed every time you run the program, right? These values can be changed because you are going to input the values. When you initialize the value, when you declare the value, it cannot be changed. But when you input the value can be changed every time when you run the program. First time I give the value of A is 15. Second time the value of B is 10. Now the addition is displaying here 25, subtraction is displaying here 5, multiplication 150, and division is 1. The remainder is 5. When you divide 15 by 10, the remainder would be 5. Clear? So this is a simple program of C++ for all the arithmetic operations. All the arithmetic operations. Now I'm going to show you the screen of C++. Can you see the screen now? Is it displayed? C++ environment? Yes, students. Is it displayed in your Nawal? It is not displayed. I have shared the screen. Check now. Now tell me. Okay, fine. Okay, this is the environment of C++. IDE environment, as I told you, that these are the menu-based environment. This is the compilation log. Now I am going to open a file of C in the on your screen. C. This is the first program. Include iostream using namespace std सेमीकोलन इंटीजर मेन ब्लैंक इंटीजर है नंबर हमारे पास यानी हमें कोई ना कोई नंबर लेना ये वेरिएबल है नंबर इज अ वेरिएबल you can use num as well you can give any type of name to the variable I give the variable name number right cout लेस देन साइन एंटर एन इंटीजर इंटीजर हमने एंटर करना है सी इन इनपुट लेना है हमने क्या देना है हमें नंबर ठीक है फिर सी आउट यू एंटर्ड नंबर वेरिएबल अगर मैं एक जगह लिख सपोज आई एम गोइंग टू मेक सम चेंजेस इन इट ठीक है आई एम गोइंग टू गिव चेंज द वेरिएबल नेम NUM, right? I am giving the variable NUM. Now I'm going to change it everywhere in the program. NUM here as well. NUM, right? Now the program is done. Now I'm going to compile and execute it. Execute, compile and run. Now the compilation is in process. So see the result. See, there is here it is compilation results, errors, 0, warnings, 0. Output file name is given here. Output sizes is of this type. Size, compilation time 8.28 seconds. Now I am going to enter an integer 78. You entered 78. Now, what is the message? Process exited after 19.3 seconds will return value 0. Press any key to continue. I'm going to press it. Is it clear?
yes, Naman, what you were saying? Please tell me. File के बाद कौन सा option click करें? Okay, file here. Now I'm going to open a second file. File, open. It is saved in my downloads. That's why I'm opening it from there. जहाँ भी आपका प्रोग्राम सेव होगा वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे, whether it's a document file or it's a download file. मैंने ये डाउनलोड किए हुए इसलिए मेरे पास डाउनलोड्स में आ रहे हैं. ठीक है. Now I'm going to use program number 2. Here it is. This is program number 2. First of all, include IOStream using namespace std, integer main, blank, parenthesis. Integer हमने अब इसमें वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया. फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, सम ऑफ टू नंबर्स. हम इसमें सम कर रहे हैं प्रोग्राम में. ठीक है. सी आउट, एंटर टू इंटीजर्स. सी इन इनपुट क्या लेंगे हम? फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर. हमने दोनों इनपुट्स एक साथ ले लिए. Now the comment is also given here. We are giving two backslashes for the comment, and the comment is sum of two numbers is stored in variable sum of two numbers. ठीक है. Now the third variable sum of two numbers is equal to first number plus second number, and print first number, second number, sum of two numbers. I am going to compile it and run it. Compile and run. Here the compilation is going on. Enter the first integer 56. Enter the second integer 78. Now the sum of 56 and 78 is given here. Now any question? Now I'm giving you the giving an error in this. Let's suppose we remove this less than sign here, right? Now I'm going to compile it again. Compilation is going on. The line is not displayed when you run it, right? If you want to write these, you can write it. I'm going to change the variable names. First num, second sum. सिर्फ इसको सम ही रखेंगे, बस हम इतना बड़ा वेरिएबल नेम देने की कोई जरूरत नहीं है. हम इसको सिर्फ सम पे ही रखेंगे. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर भी जहाँ हमने फर्स्ट जगह वेरिएबल नेम चेंज किया, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू चेंज एवरीवेयर. We had not written C out before sum. Yes, we have written it. ये लिखा हुआ C out. First number plus second number is equal to sum. अच्छा, फर्स्ट नंबर हमने क्या वेरिएबल नेम दिया है? फर्स्ट नम. और सेकंड को भी हमने यही नाम दिया है, डिलीट दिस. और फिर हमने सम जो है वो सिर्फ सम रखा हुआ है. देयर इज नो नीड टू राइट दिस मच लॉन्ग वेरिएबल नेम. Now I'm going to change it everywhere. First name, second name, and sum. ठीक है. First we have initialized three variables, that is first name, second name and sum. ठीक है. फर्स्ट नंबर इनपुट लिया हमने, सेकंड नंबर इनपुट लिया, राइट. ये हम दो डिफरेंट लाइंस में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रोग्राम में करवाया था. ये हम दो डिफरेंट लाइंस में भी लिख सकते हैं और सेम लाइन में भी लिख सकते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हमने रिमार्क्स दे दिए, और उसके बाद हम इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड किया, सेमीकोलन आया, और फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज सम. नाउ कंपाइल इट अगेन, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन. देयर इज नो एरर. 55 the addition of 55 and 55 is 110. ठीक है. If you want to write the program, you can. This is the compile log.
where compilation has been done and it provides you the number of errors here, warnings, and the detail of the program. You want to write it down? Download C++ in your computers, please. जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा. इसमें ये प्रोग्राम्स खुलते जा रहे हैं. लाइक ये मैंने C+ में प्रोग्राम 2 खोला था. दिस इज प्रोग्राम नंबर 1. मजीद ओपन करूंगी तो इसमें सारे प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे मेरे पास. एनी क्वेश्चन बेटा? Nawal, if you were asking about cout written here, यहाँ तो calculation हो रही है. There is no need of cout here. Okay, this is the first program. Write it down. And be careful about the syntax. I'm telling you again and again, be careful about the syntax. Yes, have you written? Okay, I'm going to open third program. This is the third program. ठीक है? Integer हमने declare कर दिए. Divisor, dividend, quotient and remainder. इसमें भी calculations हो रही हैं. पहले हम इन्हें रन करके देख लेंगे. Remainder 2, quotient 5. ठीक है? And divisor 6 and the dividend is 32. When you divide 32 by 6, 6 5s are 35, so the quotient is 5 and the remainder is 2. You can write it down. Yes, Minal, have you written? Minal, you have already downloaded C++, so you can write this program today. Write it down. See, I have used another statement here, n line. ठीक है?
So this is program number 1, program number 2, program number 3. Now I'm going to switch towards the book. If it is written, I can switch toward the book. Now we are moving toward the increment operator. The increment operator can be used with any type of variable. It is used to add 1 to the value of the variable. जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट टाइम उसमें 1 का इंक्रीमेंट. ठीक है. इसमें दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं इंक्रीमेंट में, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स. यानी पहले जो इंक्रीमेंट लगते हैं उसका क्या फर्क पड़ता है और जो आप बाद में लगाते हैं हम इंक्रीमेंट उसमें क्या फर्क है. ठीक है. Now, first of all, include IOStream using namespace std integer main void और blank parenthesis. It's up to you. Now, integer हमने डिक्लेयर कर दिया a जो 10 है. ठीक है. फर्स्ट टाइम हमने a की वैल्यू 10 दे दी है. Cout backslash n value of a is plus a when it is prefix. Prefix means before the variable. Before the variable. अगर ये बिफोर द वेरिएबल है तो ये इसमें 1 को प्लस करेगा एंड द आउटपुट इज 11. ठीक है. इन प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेशन वैल्यू ऑफ a is printed as 11 because 1 is added in a before printing. Before printing ये 1 को ऐड कर देगा. ठीक है. जब ये पोस्ट फिक्स होगा लाइक इंक्रीमेंट ऑपरेटर a के बाद लगेगा. प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में. ठीक है. प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये 1 की वैल्यू ऐड कर देगा. लेट्स सपोज इफ फर्स्ट टाइम आई गिव द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 15. व्हाट विल बी द आउटपुट if I put the increment prefix increment? Output will be 16. ठीक है. And in the postfix, this is the postfix increment operator. In postfix increment operation value, a is printed as 10 because 1 is added in a after printing. जब हम print कर देंगे उसके बाद 1 add होगा इसमें. ठीक है. So this is the difference between postfix and prefix increment operator. पोस्ट फिक्स में वैल्यू बाद में ऐड होगी प्रिंटिंग के बाद और प्री फिक्स में वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा प्रिंटिंग से पहले. ठीक है. पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज अप्लाइड आफ्टर द वेरिएबल नेम. इट इज नोन एज पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर. ये हमारे पास आए हैं पोस्ट फिक्स यानी ए के बाद हम इंक्रीमेंट लगा रहे हैं और ये हमारे पास है प्री फिक्स यानी हम प्रिंटिंग से पहले इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू. ठीक है. इन द सेम वे द डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स वर्क्स एज सेम एज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर विद द डबल माइनस साइन. डबल माइनस साइन बिफोर द वेरिएबल इज प्री decrement operator and after the variable minus sign double minus sign, right, is the postfix decrement operator. ये डिफरेंस है दोनों में कि जब डिक्रीमेंट भी आप करेंगे तो जब आप पोस्ट फिक्स करेंगे तो वो प्रिंटिंग के बाद वैल्यू में से माइनस होगा. ठीक है. फर्स्ट टाइम वैल्यू 10 थी, प्रिंट इट प्रिंट्स 10 and after that after printing it decrease 1 from this 10, right. In post prefix decrement, when I put 2 minus sign here, the first time printing the output will be displayed on will be 9. Is that clear? Any confusion class? Any confusion students? Any question?
I'm not moving forward. आप इसमें इसको पहले एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए और after that I'll start the rest of the chapter in the physics class. No question? Okay, then we'll continue the chapter in the physics class. If you have any question, you can ask me in the class. Thank you. Allah Hafiz.